Hello students, welcome back. So today we are going to start another topic of the chapter Molecular Bases of Inheritance. Okay, so in the previous lecture already we have done about the nucleoside, nucleotide, because it is that thing by which we will combine and will make a DNA or the nucleic acid, whether it may be DNA or it may be RNA. राइट सो हियर वी नो दैट हाउ इट फॉर्म्स. हमें पता चल गया है कि डीएनए किससे बना है, न्यूक्लियोटाइड से, एंड दिस न्यूक्लियोटाइड कंप्राइजेस ऑफ थ्री थिंग्स. व्हाट आर दे? दैट इज नाइट्रोजनस बेस, देन राइबोज शुगर, एंड थर्ड थिंग फॉस्फेट ग्रुप. Okay, so with the help of this thing, how the DNA is made up of and what is the structure here. So let's start with some basic thing, that DNA is what? We know that DNA is a genetic material. As in this chapter, we will talk about the DNA or RNA. So here mostly we are focusing on the DNA, that is deoxyribonucleic acid. So whenever we are talking about the genetic material, it means that what is that thing which is transmitting from parents to their offspring. So what it is? It is the genetic material. So what is the genetic material? DNA is a genetic material. Okay. Now another thing, if we are talking about, it is made up of nucleotides, right? So what type of it is? It is a deoxyribonucleotides. See, as we are discussing about the nucleic acid, क्योंकि DNA भी और RNA दोनों ही क्या है? न्यूक्लिक एसिड. किससे बने हैं? न्यूक्लियोटाइड से. सो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द डीएनए स्पेसिफिकली, जब हम डीएनए की बात करेंगे तो वो कैसे न्यूक्लियोटाइड्स होंगे? डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स. ओके, सो व्हाट इज द डिफरेंस? डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, राइट? नाउ द नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स और द बेस पेयर्स. ओके, नाउ in the later we will understand the structure of DNA. Here I have drawn that what is the structure of DNA? Double helical structure. ओके, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होगा. तो इसमें क्या होंगे? कुछ न्यूक्लियोटाइड से बने होंगे. दिस डीएनए इज मेड अप ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स. सो एज वी हैव डिस्कस्ड दैट इट इज अ लॉन्ग चेन ऑफ दिस न्यूक्लियोटाइड्स. सो वी कैन सी हियर देयर विल बी प्यूरिन pyrimidine, purine pyrimidine. Okay, like this there will be pairing. So here we are talking about the number of nucleotides. यहाँ पे हम ये कह रहे हैं कि जितने न्यूक्लियोटाइड्स होंगे वो ये बताएगा कि डीएनए की लेंथ कितनी है. For example, if I say this is a structure and we know that we will study that this part is A, then this part is T. Okay, why? Because purine always combine with the pyrimidine, right? Now like this same thing happen G, C, then A, then T. So what is happening कि जब हमारे पास क्या होंगे? बेस पेयर. ये क्या कहलाएगा? ये एक बेस पेयर. then another one. Okay, why? Because it is having two things, that is adenine as well as the thymine. Okay, so on the basis of this thing, ये डीएनए पूरा किसका बना है? इसी न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंसेस का बना है. तो हम क्या कह रहे हैं कि जितने न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं या फिर जितने बेस पेयर होते हैं उस पर डिपेंड करती है डीएनए की लेंथ कैसी है. एंड इट विल वेरी फ्रॉम इंडिविजुअल, सॉरी इट मे वेरी फ्रॉम स्पीसीज टू स्पीसीज. हर एक में ये लेंथ क्या होगी? अलग अलग होगी. इफ यू विल टॉक अबाउट दिस ई कोलाई, ओके, इट इज अ बैक्टीरिया. सो व्हाट इज द लेंथ? Here you have to memorize all these things because it is important from the examination point of view, because it is clear fixed है ये वैल्यू आपको याद रखनी है कि ई कोलाई की लेंथ कितनी होती है. बैक्टीरियोफेज, okay, that is 5174, and another phage is lambda phage. Okay, so value is fixed. So this is the value determined already by the scientists, that on the basis of these base pairs what will be the length of the DNA. Okay, here another thing, human being. So what is the determined length of the DNA in case of human being? Written here 3.3 10 raised to the power of 9 base pair. Okay, so here it is fixed, so you have to memorize it. Now another thing which I have written here, so whenever we are talking about the DNA, okay, so DNA is made up of, as we said, ribose,
Okay, but here this ribose is for what? For the RNA. If we are talking about the specifically DNA, जब हम DNA की बात करेंगे तो हम राइबोस शुगर नहीं लेंगे. Instead of that, what type of sugar it will be? Deoxyribose, in which only one hydroxyl group is present, which we have already discussed earlier in the session. So here we are in for making the DNA, we should have the deoxyribose, nitrogenous base and phosphate group. Okay, so now on the basis of this thing we made nucleoside and nucleotide. Okay, what is nucleoside? Whenever we are talking about that sugar is combined with the nitrogenous base, जब sugar, okay, चाहे वो राइबोस शुगर हो चाहे वो deoxyribose sugar, we are not talking about the DNA or RNA. Okay, we are talking about general. So if you are making any nucleic acid, so there should be a combination of sugar plus nitrogenous base. जब भी इसका combination होगा तो हमें क्या मिलेगा? Nucleoside. And when both will combine with another phosphate group, it will form the nucleotide. Right? So we are having different nitrogenous bases. हमारे पास कितने नाइट्रोजनस बेसिस है? डिफरेंट नाइट्रोजनस बेसिस है. ऑन द बेसिस ऑफ दिस वी विल मेक द न्यूक्लियोसाइड एज वेल एज द न्यूक्लियोटाइड ऑफ द डीएनए. ओके, अगर हम आरएनए बनाना होगा तो हमारे पास क्या नहीं होगी? शुगर. कौन सी शुगर होगी हमारे पास? वी आर हैविंग द राइबोस शुगर. इफ वी हैव टू मेक द डीएनए वी आर हैविंग द डीऑक्सीराइबोस शुगर. सो ऑन दिस बेसिस वी हैव नेमिंग ऑफ द डिफरेंट टाइप्स ऑफ नाइट्रोजनस बेसिस. हम नेमिंग करते हैं केमिस्ट्री में भी डिफरेंट कंपाउंड के डिफरेंट नेमिंग. सो अगेन हियर वी विल नेम ऑन द बेसिस ऑफ देयर कंपोजिशन. सो वी आर हैविंग द फर्स्ट नाइट्रोजनस बेस दैट इज एडेनिन. वी आर प्रेजेंटिंग विद द ए. सो व्हेन वी हैव टू मेक द न्यूक्लियोसाइड, अगर हमें न्यूक्लियोसाइड बनाना है तो हमारे पास क्या होना चाहिए? वी आर हैविंग द व्हाट विल बी द कॉम्बिनेशन? दैट एडेनाइन प्लस that is nitrogenous base and sugar should be किस तरह की शुगर होगी? अगर हम आरएनए की बात करें, आरएनए में पास राइबोस शुगर. ओके, जब हमें डीएनए बनाना हो हमारे पास डीऑक्सीराइबोस शुगर. ओके, सो व्हेन राइबोस विल कंबाइन विद एडेनिन, सो व्हाट इट विल फॉर्म? एडिनोसाइन. Again, when this deoxyribose sugar will combine with adenine, it will form deoxyadenosine. ओके, इसी तरीके से हम सबकी नेमिंग देंगे. एडिनोसिन, बस डीऑक्सी हमें आगे से पुट कर देना है, द डीऑक्सी एडिनोसिन. नाउ अनदर इंपॉर्टेंट थिंग इज न्यूक्लियोटाइड. न्यूक्लियोटाइड क्या था? जो हमारे पास न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फेट, हमने न्यूक्लियोसाइड का पूरा लेके उसके आगे क्या ऐड कर दिया? फॉस्फेट ग्रुप. सो व्हाट इट विल फॉर्म? इफ आई विल रिकॉल दैट शुगर आरएनए में कौन सी होगी? राइबोस शुगर. ओके, राइबोस प्लस हमारे पास क्या है? शुगर. ओके, ribose sugar plus adenine nitrogenous base and the phosphate group is added. So what it will form? Adenylate acid. Okay, what it will form? Adenylate acid. Again when we are talking about the DNA, DNA में ribose की जगह deoxyribose होगी तो हमने क्या कह दिया? deoxyadenylic acid. Okay, deoxyadenylic acid. So make sure you must know that how these namings it is getting here. It may be asked in the examination. So what is a nucleoside of adenine? What is a nucleotide of adenine? So directly you have to put this answer there. Okay. So for that you have to understand it, why we have given this name particularly to this nucleoside and this nucleotide. Okay. Same thing we will follow here also. Guanine, that is guanosine. If simple ribose sugar, if there will be deoxyribose, then it will be deoxyguanosine. And इफ यू टॉक अबाउट द न्यूक्लियोटाइड, जब फॉस्फेट ग्रुप फिर ऐड कर दिया हमने इस न्यूक्लियोसाइड के साथ में तो वो क्या बन जाएगा? ग्योनिलिक एसिड. एंड डीएनए में डीऑक्सीग्योनिलिक एसिड. नथिंग यू हैव टू डू. देन साइटोसाइड, साइटोसाइड में क्या बन जाएगा? साइटिडीन. ओके, साइटिडीन. एंड डीएनए के केस में डीऑक्सीसाइटिडीन. देन आरएनए साइटिडिलिक एसिड. Okay, then in DNA deoxycytidilic acid. So here we are making nucleoside, here we are making nucleotide. The rest is thymine. Thymine is thymidine, and we are adding deoxythymidine. Then in case of RNA, thymidilic acid. Okay, and again deoxythymidilic acid. Now we know that in case of RNA, instead of thymine, it will be replaced by the
यूरेसिल। अब थायमिन के केस में क्या होगा, यूरेसिल आ जाएगा। तो हाउ यू विल नेम दिस यूरेसिल हियर ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्ट्रक्चर, और न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड विल बी यूरिडिन। यूरिडिन क्या होगा, न्यूक्लियोसाइड, और अगर डीएनए की बात करें डीऑक्सी यूरिडिन, एंड यूरिडिलिक एसिड इज फॉर न्यूक्लियोटाइड. Okay, now you can see here these two are what, these are the purines. ये क्या है, purines, and these two are the pyrimidine. Okay, we have done this thing, two types of nitrogenous bases, that is purine and pyrimidine here. So on the basis of this thing we will make the structure of the DNA and how it look like. So in your NCERT book one diagram is mentioned here. This diagram is very very important. Why? Because it may be asked for the naming as well as to draw this structure. So what is this structure? हमने पढ़ा था कि कौन सा स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर है न्यूक्लियोटाइड का. If you see here there is one phosphate group, okay, then this nitrogenous bases. So what we are saying that in this structure जो DNA का स्ट्रक्चर है वो किससे मिलकर बना हुआ है, नाइट्रोजनस बेसिस, फॉस्फेट ग्रुप एंड द राइबोस शुगर. ओके, दिस इज द राइबोस शुगर. और ये वाला क्या है, ये फ्री एंड है. व्हाट टाइप ऑफ फ्री एंड, दैट इज 5' एंड. ओके, फॉस्फेट ग्रुप में क्या होगा, फ्री एंड होंगे, और अनदर विल बी द OH ग्रुप, दैट विल बी द फ्री एंड. सो हियर वी कैन सी दैट दिस होल स्ट्रक्चर इज आउट ऑफ द रिंग which we have drawn earlier also. So one nitrogenous base, that is adenine, then it is connected to the another one, that thymine. Like this it will connected with the whole structure. ये पूरी एक chain बन जाएगी. So here what you are seeing that they are connected with some bond. What type of bond? If we will talk here between this ribose sugar and the nitrogenous bases, कभी भी किसके बीच में, राइबोस शुगर और नाइट्रोजनस बेस के बीच में कोई भी बॉन्ड होगा तो व्हाट टाइप ऑफ बॉन्ड इट विल फॉर्म, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड. ओके, हमने ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड और कहाँ पढ़ा था, व्हेन वी वर टॉकिंग अबाउट द ग्लूकोज. ओके, ग्लूकोज में जितने भी बॉन्ड बन रहे थे वो कैसे बॉन्ड थे, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड. सो हियर व्हेन this structure, because it's a part of carbohydrate, okay, what type of it is ribose sugar, and this ribose sugar when added with the adenosine it is connected with the help of this glycosidic bond. जितने भी आपको दिख रहे हैं ये क्या दिख रहा है, ये glycosidic bond. Okay, now if you will talk about the another bond, that is phosphodiester bond. हमने पढ़ा था कि क्या होता है, there will be ester formation. How it is forming, when the alcohol and the acid will react, it will form what, it will form ester. So same thing happening here, this phosphate is connecting. जहाँ पर भी ये phosphate connect कर रहे हैं ये कैसे bond होंगे, phosphodiester bond. Okay, so two bonds we have done here. And when we will study about the structure, okay, when we will talk about the structure of DNA, we know that how the combination takes place, how the pairing takes place. हमें पता होना चाहिए कि पेयरिंग कैसे होती है. सो इफ आई विल रिपीट हियर, so how the pairing takes place, the pairing takes place that purine, okay, and this one is pyrimidine. We know that what is the structure of purine. If you will see the structure of purine, it will be like this, double ring, and pyrimidine is a single ring. Okay, and what are the examples of purine, adenine, A, and another one is the guanine. So here always this purine A always connect with the T with the help of what type of bond, double bond. And what type of bond is situated between G and C, it is the triple bond. ओके, तो हमें क्या पता होना चाहिए कि A और G दोनों ही प्यूरिन है और T और C दोनों ही pyrimidine है. So how the pairing takes place between the adenine and thymine, that is double bond. And what type of bonding takes place between guanine and cytosine, that triple bond. So here we will understand the reasoning also, why it is happening so, and what is the advantage of this thing. Okay, now maybe in your mind one question is there, why we are not connecting purine, okay, or pyrimidine, why it is happening so. See students, if we will add purine and purine, what will happen, there will be so long chain it will form. अगर हम प्यूरिन को कंबाइन करेंगे तो हमारे पास चेन क्या हो जाएगी, लेंथी हो जाएगी. हाउ, बिकॉज सी द स्ट्रक्चर ऑफ प्यूरिन, it is almost
touring structure, again touring, then touring. So what type of structure it will form? It will form the long structure, and this structure will not be accommodated in the structure of the DNA. DNA की structure में क्या नहीं होंगे? ये nitrogenous base fit नहीं आ पाएंगे, right? And if you will talk about the pyrimidine, अगर हम pyrimidine ही connect करेंगे तो क्या होगा? Structure छोटा हो जाएगा. Again it will be problem. So here what we are doing? We are connecting the purine with the pyrimidine, then purine with the pyrimidine. The only difference that A and T double bond is there, and G and C triple bond is present. Okay. So now we will discuss about some of the discoveries related to the structure of DNA. Okay, DNA की discovery के लिए there were the different scientists who gave something important about the structure of DNA. Okay, because earlier it was not known that this genetic material is DNA. पहले किसी को नहीं पता था कि genetic material क्या है? DNA. किसी को लगता था क्या? किसी को लगता था कि it is protein or it may be some type of thing which is present inside the nucleus. So if we'll talk about some of the history here, the first one is Friedrich Michel. In 1869, what he said that DNA is an acidic structure. Okay, this structure is an acidic, and where it is present in the nucleus, and that's why with this content it is said it is a nuclein. अभी तक हमको ये नहीं पता था कि ये DNA है. Okay, वो उसको क्या कहते थे? They were said the nuclein, which is present inside the nucleus, and this is acidic substance, and this substance is responsible for the transmission of character. Okay, now later on the Altman in 1899 he came, and what new he did that as it is acidic in nature, क्योंकि हमने क्या कहा न्यूक्लियन कैसा है? एसिडिक नेचर में. सो he replaced the name and he renamed it as a nucleic acid. Okay, अब क्या कह दिया उन्होंने? Nucleic acid. And we know that all the things are the same, that is DNA. हम सब में किसकी बात कर रहे हैं? DNA की ही बात कर रहे हैं. And we know that DNA is a nucleic acid. Okay, now later on, then in 1910 Levin came, and what he observed that DNA contains phosphoric acid as well as the deoxyribose sugar. ओके, इन्होंने ये कहा कि डीएनए में क्या प्रेजेंट रहता है, और earlier he said that acidic substance, पहले उन्होंने कहा था कि एसिडिक सब्सटेंस है. लेटर ऑन उन्होंने डिस्कवरी में ये पता लगाया कि उसमें क्या फॉस्फोरिक एसिड भी प्रेजेंट है, एज वेल एज द डीऑक्सीराइबोस शुगर इज आल्सो प्रेजेंट. ओके, which is a part of nucleotide, right? And he characterized the 4 type of nucleotides. What are they? A, T, G, C. Okay, we have done this thing. A for adenine, guanine, thymine, and then cytosine. Okay, we are not talking about the uracil. Why? Because we are talking about the DNA. DNA में there is no use of uracil. So here he characterized the 4 types of nucleotide that is present. इन्होंने कहा था कि 4 तरीके के nucleotides present रहते हैं in the DNA. Right? Now very important. Alvin Chargaff. This is very important. In 1950, he gave some idea. He gave some generalization on the bases. Okay, on the bases. What type of bases we are having? Nitrogenous bases, A, T, G, C. So on this basis, he gives some generalization that how we can find out the value that what is present inside the DNA and how much. कितना डीएनए में कौन सा न्यूक्लियोटाइड बेस प्रेजेंट है, वो हम किससे पता लगा सकते हैं? बाय द हेल्प ऑफ एल्विन चार्गफ. ओके, एंड दिस रूल इज नोन एज चार्गफ्स रूल. सो हियर सम जनरलाइजेशन ही गेव हियर. ओके, द फर्स्ट थिंग ही सेड दैट टोटल नंबर ऑफ प्यूरिन, ओके लिसन केयरफुली, टोटल नंबर ऑफ प्यूरिन इज इक्वल्स टू टोटल नंबर ऑफ pyrimidine. So now recall that what are the purines? Purines क्या थे हमारे पास? What were the purines? Purines were the adenine as well as guanine. हमारे पास 2 purines थे. Okay, and pyrimidines we were having. Pyrimidine क्या थे हमारे पास? Then T and C. DNA में हमारे पास purine AG and pyrimidine TC. So what according to this rule that total amount of purine, जितना purine होगा उतना ही pyrimidine भी होगा. Okay, what is that? जितना purine होगा उतना ही pyrimidine होगा. So if you will see the structure of DNA,
Okay, we will understand the structure also. So it is made up of the combination of these nitrogenous bases. A और T के बीच में I said डबल बॉन्ड, G एंड C ट्रिपल बॉन्ड. तो ये क्या होंगे, इसमें सारे बेसिस पेयर अप होंगे. सो हियर हम कह सकते हैं डीएनए में जितना प्यूरिन होगा उतना ही pyrimidine होगा. फॉर एग्जाम्पल इफ आई से प्यूरिन इज 50, देन pyrimidine विल ऑल्सो बी 50. ओके, प्यूरिन अगर 40 है तो ये भी 40 है. Okay, so here what we want to say that the concentration of purine or the number of purine is equals to pyrimidine, right? So अगर ऐसा होगा तो वो वैल्यू क्या हो जाएगी 1. So हम ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं. We are having 2 purine and 2 pyrimidine. A plus G plus T plus C. हमारे पास कितना हो जाएंगे 1. कैसे होंगे? फॉर एग्जाम्पल इफ यू से A plus G, okay, 20 purine है, 20 pyrimidine है. ओके, वी हैव नॉट कैलकुलेटेड हाउ मच ए एंड हाउ मच जी. होल सम वी हमने क्या कहा, ये पूरा ए प्लस जी क्या है प्यूरिन और टी प्लस सी पूरा क्या है pyrimidine. अगर हमको कट करेंगे तो व्हाट वी आर गेटिंग 1 एवरी टाइम. ओके, इफ आई एम सेइंग ए प्यूरिन इज 40 एंड pyrimidine विल आल्सो बी 40. ओके, अगर 40 है तो बट obvious that pyrimidine will also be 40. Again if we will cut it, again we will get 1 here. So this shows that the concentration of purine or the amount of purine as well as pyrimidine will be same every time in the DNA. Okay, another important thing, the proportion of A. Okay, the proportion of A will always be equal to T and G always equal to C. ओके, ए हमेशा कितना होगा टी के बराबर होगा. जितना ए होगा उतना ही टी होगा, जितना सी होगा जितना जी होगा उतना ही सी होगा. सो वी कैन से दैट द प्रपोर्शन ऑफ ए इज इक्वल्स टू टी एंड जी इज इक्वल्स टू सी. ओके, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द ए प्लस जी, वी आर टॉकिंग अबाउट ओनली, हमने सिर्फ एक की बात करें कि जितना ए उतना टी. राइट, इफ ए इज 30 देन अगेन टी विल बी 30. राइट, सो हियर बट there is one condition, A is equals to T, but if you will take the value like this A plus T and G plus C, it will not always equal to 1. Okay, ये 1 नहीं होगा. Why? It may vary according to the organism. और ये fixed होता है कि ये value हर organism में कितनी होती है. Okay, it is fixed for human beings, it is fixed for dogs. So this value is fixed for a specific species. Okay, constant for species, and it may change accordingly organisms to organisms. So here I have written but not necessary A plus T is equals to G plus C. ओके, सो हम ये नहीं कह सकते A plus T is equals to G plus C. हमने ये तो कह दिया कि जितना A है उतना T है, लेकिन हम दोनों को ऐड करके इक्वल वैल्यू नहीं कह सकते हैं. Right here, so two things which we have concluded from this Chargaff's law, that purine will always remain equal to pyrimidine, and another one that A will always equal to T and G will always equal to C, because they both are pairing with each other. Okay, so now this you can understand more quickly with the help of this example. अगर हम इस example की बात करें तो आप अच्छे समझ पाएंगे कि what we want to say here from this law. So as it is written here, in a double stranded DNA molecule, okay, हमारे पास double stranded, for example it is shown here double stranded DNA. और पता है कि DNA हमेशा कैसा होता है double stranded. In double stranded DNA molecule, the value of cytosine is equals to 18%. साइटोसिन कितनी है 18%. So what will be the value of adenine? तो adenine कितने परसेंट होगा? हमें साइटोसिन का परसेंट दिया है, हमें एडेनिन का परसेंट कैलकुलेट करना. सो हाउ वी विल कैलकुलेट हियर? फॉर एग्जांपल एज आई हैव सेड हियर, प्यूरिन ऑलवेज इक्वल्स टू pyrimidine. ओके, हम यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं? परसेंट की. इफ आई से दोनों का इक्वल परसेंट होना चाहिए तो 50-50%. आई अज्यूम दैट 50% प्यूरिन 50% pyrimidine. ओके, दोनों बराबर हो जाएंगे परसेंट में. नाउ व्हाट वैल्यू यू आर हैविंग, आपके पास कौन सी वैल्यू है? You will put it here. Okay, प्यूरिन हमारे पास A और G है, pyrimidine हमारे पास T and C. In all the cases we will put like this only. So value of cytosine कितनी है हमारे पास? 18%. I am writing here 18%. Okay, total pyrimidine हमारे पास कितना है? 50%. 50 में से हमारे पास कितना है ये? साइटोसिन 18%. So what will be the value of T? T की वैल्यू कितनी होगी? 50 minus 18. Okay, 50 minus 18. So what will be the value? 10 minus 8, 2. Then 4.
minus 1 3. So how many percent we are getting here? 32%, right? So साइटोसिन की वैल्यू हमको दी थी, हमने टी की वैल्यू निकाल ली, कैसे? 32%. नाउ वी नो दैट ऑलवेज एंड ऑलवेज ए ऑलवेज इक्वल्स टू टी, ए हमेशा टी के बराबर होता है और वाइस वर्सा टी भी ए के बराबर होता है, जी सी के बराबर होता है और सी जी के बराबर होता है, दोनों का परसेंटेज बराबर होता है. तो अगर सी 18 है तो जी भी 18% होगा, राइट हियर. अनदर थिंग, अब अगर आपको वैल्यू दी जी की पूछी थी तो आप डायरेक्टली कैलकुलेट कर लेते, यू कैन कैलकुलेट इट वेरी इजीली. बट व्हाट दे हैव आस्क्ड, उन्होंने एडेनिन की वैल्यू पूछी है तो उसके लिए आपको थायमिन की वैल्यू निकालनी जरूरी थी. सो हियर व्हाट इज द वैल्यू ऑफ थायमिन नाउ? सेम विल बी द वैल्यू ऑफ एडेनिन, सो 32%. Okay here, so we can say what should be the answer? 32%. ओके, सो वाई वी आर सेइंग प्यूरिन और pyrimidine तो इक्वल है, लेकिन A और T की वैल्यू इक्वल है. बट इफ यू विल टॉक अबाउट A प्लस G, ओके, सो इट विल बी समहाउ डिफरेंट. वाई? बिकॉज A कितना है 32 और G कितना है 18. ओके, if you will do A plus T, then if you will divide the G plus C, you will not get 1, आपको 1 नहीं मिलेगा. अगर आप A plus G करेंगे और T plus C करेंगे आपको 1 मिल जाएगा. ओके, so this can be the check for these two laws here. Okay, so today we have done about the structure of DNA or the law which is associated with this DNA structure. So later on we will study more about the structure of DNA, how we can calculate the value, what value is important, in how many terms we will calculate the value, about the base pair. So we will do all these things. So today we have done this Chargaff law. This is very important. Okay, so that's all for today. Thank you.